लाइव ऑन जूम। फटाफट फटाफट जो जूम की जनता है सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन करके बैठेंगे। दिस सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट सेशन आफ्टर योर क्वालिफिकेशन। सीए बनने के बाद का पहला सेशन है। राइट, सीए बनने के बाद आपका पहला सेशन है। राइट, विच इज देयर। सर सीए बनते ही सर काम की और पढ़ाई की बातें करने लगे हम लोग, ऐसा क्यों सर? वाई 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 सर? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ थोड़ा कमाना है अभी सीए बन के नहीं। राइट, ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम अमनदीप इज स्टार्टेड थिंकिंग। अमनदीप को तो कल सपने में पैसे आने लगे हैं ना अमनदीप? राइट, हाँ उसने साइन किया, 2 सिग्नेचर किया और 2 करोड़ रुपए मिल गए उसको। बट ठीक है, दैट इज व्हाट द जर्नी इज। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई होप द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर यू कैन जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। राइट, सबको साउंड क्लियर आ रहा है? यू कैन जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। राइट, पीपल फ्रॉम द यूट्यूब लाइव, अरे बोल दो यूट्यूब की जनता यार, आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा, देखते हैं आज कौन जीतेगा यूट्यूब लाइव पे भी। ठीक है जी, ठीक है। राइट, अंकिता जी, सॉरी सीए अंकिता जी को बधाइयाँ। सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। इट्स रियली हैप्पी टू सी योर फेसेस, इट्स हैप्पी टू सी द स्माइल्स यू आर कैरिंग इन। प्राजक्ता की तो क्या स्माइल आ रही है बाबा, वो रुक ही नहीं रही। राइट, निशिता इज लाइक हाँ हाँ सर मजा आ गया सर। है ना, फाइनली ऑडिट से बला छुटी। है ना, कुछ छूटा ना छूटा, ऑडिट से बला छूट गई। इट इज देयर एंड दैट इज व्हाट हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट। राइट, आई डोंट नो हाउ यू सेलिब्रेटेड योर डे यस्टरडे, बट यार नींद में रिजल्ट दिखा देते हैं यार ये लोग, क्या है यार, मतलब नींद से उठ के देखना पड़ रहा है ना। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस रिजल्ट इन द ड्रीम, राइट? ऐसे सपने से उठा, ऐसे नींद से उठे और देख रहे रिजल्ट। And finally, you're a qualified CA. There are few of the folks, those who were not so sure, उनको तो डाउट इतना हो रहा था कि वो सीए बनेगी नहीं, तो उन्होंने मेंबरशिप अप्लाई कर दिया सेम डे। हा, मतलब गजब, गजब डाउट है उनको। बट ठीक है, nevertheless I think still you are checking your result. I think I sometimes still check my results, which is there. मानसी जी हंस दो बेटा, सीए बन गई हो, ऐसे गुस्से से बैठी है, बाबा रे बाबा। है ना, तो इट्स रियली हैप्पी टू सी द फेसेस अराउंड, इट्स हैप्पी टू सी द जर्नी अराउंड। बट ऑलवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एंड द बिगर प्रॉब्लम्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, इज व्हाट नेक्स्ट, राइट? ये तो बन गए, अब जीवन में आगे क्या करना है? मम्मी ने तो बोली थी लाइफ सेट होगी, क्या सही में सेट होगी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस आउट एंड चेक, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ द थिंग्स अराउंड। I'll be happy if you guys can ensure that you have a notes around, right? आप एक notes ले ले, blank page ले ले, because we are going to be drawing 2 3 important journey, what is supposed to be done next, what all things you are supposed to do, how your journey is going to be looking. Today and tomorrow's session is really important. Today we have a session on what next after CA plus domain wise guidance. Tomorrow we have the most important session and that is on ICA campus placement. ठीक है, इसके अलावा एक और सेशन होगा विच इज ऑन हाउ टू फिल आउट अ कैंपस फॉर्म, दैट इज अ डिफरेंट सेशन। बट nevertheless let's start understanding about first basic parameter. Sir, what is the first basic parameter? ये तो बन गया, अब करूँ क्या? ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है सर, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू गो, वेयर टू गो। राइट, तो आई एम गोना बी ड्राइंग एन completely important chart. This chart is going to be summarizing everything which you have to do in the next upcoming 2 months 3 months till the time you're going to be getting placed. This journey is not going to be a journey for one day. एक चीज दिमाग में ला दीजिए, आज आपको लग रहा है कि मैं सीए बन गया, कल आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा गाइस। दिस journey is going to be journey of minimum 3 to 6 months, depending on your capability and depending how good you prepare for your interviews. अगर preparation अच्छा रहेगा, your journey will be short enough. If the preparation is not that great, your journey might widen up. ठीक है, but the process is going to be the same which you are going to be drawing now. I would request you to please have a plain paper, and if you can draw this chart parallelly with me, it's going to be really great and it's going to be helping you out. ठीक है जी, चलो आ जाते हैं स्क्रीन पे। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन। I hope my screen is visible to all of you. Yes. I'm going to be telling you each and every step. ध्यान से सुनना, and this is going to be helping you out. So what we are drawing is the interview process. Interview process chart. Because many of you are going to be aiming of getting into some good companies of the world. राइट, काफी लोग को होगा कि सर अब पैसा कमाना है, बहुत हो गया सर, अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। नाउ आई वांटेड टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। So what is the process, what is the step of it? So let's understand one by one. So finally today you are here, आज आप यहाँ पे खड़े हो। Who are you? You are a chartered accountant. Now how does your journey look like? आपका एक जर्नी कैसा दिखेगा? So the first basic thing is, sir, सीए बनने के बाद if you want a job you have to apply. Okay sir. सर कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? To apply you have to find out a vacancy.
You have to find out the vacancies. Now, which are major platforms where vacancies are there? सबसे ज्यादा vacancies you will be finding out on LinkedIn, Naukri, Indeed, IM Jobs, and there are some other portals also where you can get it. We also have a CMO portal called as Sambhav, ठीक है, which is of a CMO. यहाँ पे भी you'll find out lot of vacancies. इसके अलावा काफी सारे vacancies मिल जाएगी आपको in WhatsApp group, Telegram group. That is what it is. Now, the first basic step you need to understand, guys, is you should know how to leverage each and every platform. ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म को कैसे सौरभ जी लिवरेज करना है ये समझ में आना चाहिए आपको. अच्छा, just for an update, yes or no in the chat box. How many of you know that the vacancies of ICI पे आएंगे बेटा, ICI website will come to it, don't worry खुशबू जी. How many of you are aware that the vacancy of Goldman is out in the market? Goldman की vacancy आ गई है सेव रेशर को, कितने लोग को पता है चैट पे? yes or no? अरे बोलो रे, गोल्डमैन की वैकेंसीज आ गई है, कितने लोग को पता है? ओहो, सर हमें तो नहीं पता, सर हमें तो नहीं पता. आई कुड सी मेजोरिटी ऑफ द पीपल डिड नॉट नो इट, राइट? मेरा केस बता रहा हूँ, मेरा केस, मैं भी आप ही की तरह था, ठीक है. आई क्लियर्ड सीए इन 2019, ठीक है. आई गॉट अ पैकेज ऑफ 12 लाख. मैं उड़ान में प्लेस हुआ था, राइट? आई गॉट प्लेस इन उड़ान. आई गॉट अ पैकेज ऑफ 12 लाख. माय फ्रेंड गॉट अ रिवर्स ऑफ व्हाट आई गॉट. यू नो व्हाट माय फ्रेंड गॉट? ही गॉट 21, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही न्यू दैट देयर वर वैकेंसी इन द मार्केट फॉर आईटीसी, और मुझे पता ही नहीं थी. That was the biggest downside which I had. What was the downside? I did not know the vacancy was there in the market. ठीक है जी. तो कोई आके आपको सामने से चल के नहीं बताएगा कि भैया वैकेंसी आ गई है. यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट द वैकेंसीज व्हिच इज देयर, राइट? तो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द सेम. ठीक है जी. So we will get to know the vacancies which are out in the market. These are the platforms where you find the vacancies which are there. Now what next? So after you find out the vacancies, the next step is to apply. But how do you apply? Application is 3 ways: email plus resume plus cover letter. ये 3 प्रोसेस होती है. 3 चीजों के साथ आप अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी में, right? Sir, what is a cover letter? Cover letter talks about 3 great things. It talks about why this company. Some companies like Goldman will ask you for a cover letter. They ask you why this domain, and you talk about why this industry. कुछ कंपनीज जैसे कि गोल्डमैन हो गई, वो सब आपको कवर लेटर मांगेगी. अदर कंपनीज माइट नॉट आस्क फॉर यू, बट दिस इज अ फर्स्ट प्राइमरी स्टेप टू अप्लाई. जैसे ही आपको वैकेंसी दिखी, नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई यूजिंग गुड ईमेल, गुड रेज्यूमे, गुड कवर लेटर. सर द बिगर क्वेश्चन कम्स इज फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर अ रेज्यूमे. कहां से बनाए सर? नो वरीज, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी हैव क्रिएटेड अ टूल कॉल्ड एज tools.cmong.com. वहां से आप बना सकते हो. प्लस देर आर लॉट ऑफ अदर एक्सटर्नल वेबसाइट्स ऑन गूगल, कैनवा, राइट? बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसके थ्रू भी आप अपना सीवी बना सकते हो. शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट. आई जस्ट टेल यू व्हाई इन अ व्हाइल how you can create a website resume through our portal which is there. Okay, you need a good email and a good cover letter, really really important. Now after this is done, the step number 3 starts is once you apply, you'll start getting a call which is called as pre-screening call. ठीक है, इसमें आएगा प्री स्क्रीनिंग कॉल. सर व्हाट इज अ प्री स्क्रीनिंग कॉल? बेटा प्री स्क्रीनिंग कॉल इज अ कॉल व्हिच यू गेट बिफोर योर इंटरव्यू इज स्टार्टिंग. सर व्हाई वी आर गोइंग टू बी गेटिंग दिस? द रीजन इज एचआर वांट टू शॉर्टलिस्ट यू based on your communications, based on your basic technicals, plus based on some other parameters. जैसे कि HR might ask you, शिवम, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन? पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है भाई एचआर. ऐसे मुंह मत बनाओ, सच है मानना पड़ेगा. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द प्री स्क्रीनिंग. दे कैन आस्क यू, शिवम, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लोकेशन? They can ask you, Shivam, what percentage of your articleship is done in XYZ domain? So majority of the questions which are there, which are going to be asked in a pre-screening. It's the first screening step of any of the interview. Now,
प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू गोना बी सिटिंग इन द आईसीए कैंपस सेशन, आईसीए कैंपस का सेशन कल है, कल का सेशन मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो दिस टू स्टेप्स विल बी मोस्टली एलिमिनेटेड। मतलब क्या, आपको अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट फिल आउट अ फॉर्म एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर इंटरव्यूज गोना बी शेड्यूल्ड। ऑफ कोर्स यू हैव टू अपलोड अ रिज्यूमे इन आईसीए पोर्टल, दैट इज देयर, बट ईमेल और कवर लेटर का जरूरत नहीं है और ये सब का जरूरत नहीं है व्हेन यू आर सिटिंग इन आईसीए कैंपस। विल स्टार्ट विद द प्री स्क्रीनिंग। Now, very, very important part is lot of companies does not get satisfied from a pre-screening. So you know what they've started doing? A lot of companies will start conducting a filtering parameter, which is called as a test. जैसे कि it can be a combination of multiple tests. It can be a group discussion. It can be a test like Version test, aptitude test, psychometric test. Then it can be technical test. Different names will be given by different companies which are gonna be there. सब सही में होगी, हाँ बेटा, L&T टेस्ट लेगा, रिलायंस टेस्ट लेगा, विप्रो टेस्ट लेगा, अभी से बता रहा हूँ, एम्बिट कैपिटल टेस्ट लेगा, इवन ईवाई जीडीएस हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग अ टेस्ट नाउ, ठीक है। तो लॉट ऑफ कंपनीज विल बी कंडक्टिंग योर टेस्ट, आइदर यू गोना बी सिटिंग कैंपस और ऑफ कैंपस, व्हिच इज गोना बी अ सिलेक्शन पैरामीटर. In fact, Embed Capital will also conduct a test. Embed Capital, it is one of the firm which is into an IB domain. So a lot of companies will start conducting your test, which is there, and for which you have to just prepare basics of your version. What is a version test? It's an English communication listening test, which is there. Generally, EY, GDS, generally Deloitte USA and KGS is KPMG Global Services. ये दोनों company version test लेगी आपकी, ठीक है। Sir, our company is going to be conducting a group discussion. The answer is yes. Can they conduct a group discussion virtually? The answer is yes. नेहा जी, virtually भी GD हो सकता है आपका, ठीक है। तो which all companies will conduct, every big four, every big companies which hire for a management trainee role will conduct a GD. What is the management trainee role? We'll come to it in a while. But mostly majority of a companies will conduct a GD, ठीक है। जैसे कि लेट्स से हीरो मोटोकॉर्प जीडी होगा ही होगा, बीपीसीएल जीडी होगा ही होगा, देन यू हैव वेदांता 110% जीडी होगा ही होगा, ठीक है। एंड समटाइम्स इन अ बिग फोर आल्सो व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, जीडी इज गोना बी देयर, ठीक है, जीडी हो जाएगा। नाउ जीडी कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है तो मैं स्टार पे लिख रहा हूँ, तीन पार्ट में हो सकता है। इट कैन बी अ एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड जीडी, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि व्हाई वाटर इज ब्लू, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, राइट। जैसे स्काई वर्सेस वाटर, दिस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, ठीक है। रेड वर्सेस ब्लैक, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। और इट कैन बी अ केस स्टडी बेस्ड जीडी, और इट कैन बी सम जनरल टॉपिक बेस्ड जीडी। शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस द टैक्सेस, टेक्निकल टॉपिक, जनरल टॉपिक, ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन अ वर्क लाइफ बैलेंस, शुड कंपनीज आस्क एन एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज, again general topic. Some case study based topic can be also given to you, where you will be getting some case study to solve. Lot of companies like Marico, then you have Mahindra, which offers a package about 20 odd lakh, वहाँ पे GDs होंगे ही होंगे, and those gonna be are very much technical and case study with GDs which are there. So that is gonna be a part of a group discussion, ठीक है। So this is a basic stuff which you are going to be going through. Now, after the screening is done, now depending on a company you're applying for, कुछ company में directly आपको, जैसे आप apply करोगे, आपको they will not have a pre-screening, they'll not have a test, they'll directly conduct your interviews. जैसे ICICI Bank, they'll only have a one page of psychometric test, एक छोटा सा test लेंगे कि what you will do when there is a fire at your house. Number one, you'll call the fire department. Number two, you'll start screaming around. Number three, you'll run outside of your home. So just to check how you think as a part of behavior. तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग बिहेवियर होता है, which is there. सर क्या बिग फोर जीडीज ले सकती हैं? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स which are gonna be coming. Now you know what? Last attempt में there were around 11,000 chartered accountants who have cleared approximately. This attempt, the number have been increased to 14,247. तो नंबर ऑफ सीएस बढ़ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। एंड मानो या ना मानो, द वेकेंसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट। देखो, गेटिंग अ जॉब आफ्टर बिकमिंग अ सीए इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगेन आई एम सेइंग दिस आउट। सौम्या जी सीए बन गई है, जॉब तो मिलेगी मिलेगी बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है, बट सवाल है जहां तुम्हें जाना है वहां मिले तो काम का। द प्लेस वेर यू हैव टू गो, दैट रिक्वायर्स एन एफर्ट्स, दैट रिक्वायर्स अ प्रिपरेशन। अगर आप मुंह उठा के चले जाओगे, बोले जॉब दे दो, ऐसा नहीं होगा बेटा, बिकॉज पीपल आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीवीज इन द मार्केट, right? When you're not only competing with the CAs around, for some roles like FP&A, for some roles like forensic, right? For some roles like management consulting, for some roles like investment banking, you're competing with the MBAs also.
ठीक है, दैट इज देयर। जैसे कि लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट वाज द पैकेज ऑफर्ड इन द आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इन द प्रीवियस आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स, किसी को पता है? गाइस अगर यहाँ बैठे हो तो वीडियो ऑन करके बैठोगे तो ज्यादा आप चीजें सीख पाओगे, राइट? बिकॉज व्हेन यू कीप योर वीडियोस ऑन यू इंटरैक्ट मोर, यू फोकस मोर ऑन द थिंग्स अराउंड, राइट? है ना? अगर जूम पे बैठे हो तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि एक सीए बैठा है यार, सीए लोग को हम मोटिवेट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको, ठीक है? तो यू कैन जस्ट कीप योर वीडियोस ऑन एंड आई कुड फील द पॉजिटिविटी एंड एनर्जी यू आर कैरिंग। ठीक है, बताइए बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इन द प्रीवियस कैंपस प्लेसमेंट्स? ओके जी, ओके। डिफरेंट पीपल डिफरेंट परसेप्शन। देखो बेटा, अगर आप इस मार्केट में जाना चाहते हो तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स there are two companies which is there which offers the highest package in the previous campus, right? इन्होंने दो बार इशू किया और दोनों बार अलग अलग कंपनी बताई है इंस्टीट्यूट ने, मुझे नहीं पता क्यों, बट द फर्स्ट टाइम दे हैव सेड इट वाज ट्राइडेंट, सेकंड टाइम दे हैव सेड दैट इट इज डीआईजीओ। ठीक है, अलग अलग कंपनीज बताइए अलग अलग बात। तो ट्राइडेंट have offered a package of 36 lakh, DIGO have offered a package somewhere around 29 lakhs, right? 29 lakhs का पैकेज इन्होंने ऑफर किया डीआईजीओ ने। डीआईजीओ इज अ, पता है किसी को? इट्स अ ओनर ऑफ आरसीबी, आरसीबी की ओनर है, इट्स अ लिकर बेस्ड कंपनी। हाँ हाँ हाँ, लड़कों को पता होगा, हुआ होगा ना कल। हाँ, नहीं कल नहीं किया? कैसे हो भाई, शर्म करो। ठीक है, चलो ग्रेट। तो दैट इज देयर। तो डीआईजी वाज अ कंपनी व्हिच हैज ऑफर्ड द हाईएस्ट पैकेज इन द कैंपस, 29 लाख का पैकेज है व्हिच इज देयर। एंड हैप्पी टू शेयर दैट द स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड द हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम द लास्ट 3 consecutive अटेम्प्ट इज माय स्टूडेंट। इसके पहले वाले कैंपस में द हाईएस्ट पैकेज वाज ऑफर्ड बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिफोर दैट आल्सो इट वाज ऑफर्ड बाय डीआईजीओ। ठीक है, तो डीआईजीओ देन पावर फाइनेंस देन अगेन दिस टाइम डीआईजीओ इज देयर एंड ट्राइडेंट। ठीक है, तो ऐसे कीप ऑन चेंजिंग द नेम अगेन, आई डोंट नो व्हाई। तो दैट इज देयर। ओके, तो this attempt में we had one of our student, right? Ashu Jain have got the highest package. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, right? Which is there. तो when I was speaking to him, he was a part of our GR70 batch. So when I was speaking to him, तो he said, सर 12 लोग को सिलेक्ट किया डीआईजी में, ठीक है? Out of which only 2 are chartered accountants, 10 are MBAs. ठीक है, 12 लोग को सिलेक्ट किया, सर 2 सीए लिए, 10 एमबीए लिए। ठीक है, वो उसका स्टेटिस्टिक है, उसका ज्वाइनिंग हो गया, उसने मुझे बताया। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू फॉर सम रोल्स, Navneet ji, you're not only competing with yourself, you're competing with the MBAs as well. So you need to have a very strong CVs, you need to have a very strong tech preparation of technicals which is there, because एक चीज अब लाइफ में नहीं चाहिए, वो है रिजेक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं सर। नाउ आफ्टर दिस इज डन, राइट, आफ्टर दिस इज डन, हाँ, तो दिस वाज अगेन आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट आशु, तो ही जस्ट गॉट प्लेस्ड इनटू डीआईजीओ व्हिच आई वाज जस्ट सेइंग। ठीक है, चलो आ जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट। सर ये हो गया, प्री स्क्रीनिंग हो गया। आफ्टर द प्री स्क्रीनिंग इज डन, व्हाट इज गोना बी हैपनिंग? एक बार आई गॉट द कॉल, राइट, अब क्या होगा? द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स इज दिस। नाउ यू विल हैव अ टेक्निकल राउंड व्हिच इज मोस्टली गोना बी टेकन बाय मैनेजर और सम ऑफ द पीपल अराउंड। ठीक है, मैनेजर बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं, तो डिफरेंट पीपल माइट टेक इट। तो योर इंटरव्यू मोस्टली विल बी बेस्ड ऑन योर रिज्यूम, मतलब कि 80% of your interviews will be resume based. Oh, so whatever you have written in your resume, they'll be focusing more on this. Plus, they'll be asking you some basic HR questions like, can you please introduce yourself? Where do you see yourself 5 years down the line? What is your strength and weaknesses? Right? ये सब HR questions पूछेंगे. Plus, they'll also ask some technical questions to you based on the domain. So, manager round focus is majorly on these 3 areas. Depending on a type of a manager, you might have a different round of interviews as well. राइट, जैसे कि इफ यू गो फॉर अ गोल्डमैन, गोल्डमैन के काफी टेक्निकल होंगे इंटरव्यूज। व्हेन यू गो फॉर अ डी शॉ इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच ऑफर्स अ 30 लाख एंड अबव का पैकेज ऑफ कैंपस। तो डी शॉ में 6 राउंड तक के भी हो सकते हैं, 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज कैन आल्सो हैपन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू आर गोइंग, यू माइट हैव अ डिफरेंट राउंड। जैसे कि यू गो टू बिग फोर माइट हैव अ 1 or 2 राउंड डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू लेवल व्हिच इज देयर। So you might have technical round 1, you might have technical round 2, but majorly this technical round or the manager round which is going to be there, this is focusing on this 3 things only. ठीक है, resume, HR and technical services there. Okay.
Now, after this is done, you have a final round, which is called as a CFO round, or a partner round, or a director round. ठीक है, ये सब राउंड हो गए. Now, when you are going to be sitting here in the partner round, it's all about one great thing, and that is a confidence. सर बिग फोर के स्टार्ट ऑडिट के पार्टनर का इंटरव्यू राउंड है. क्या चेक करेंगे बेटा? कॉन्फिडेंस. शिवम गुप्ता बेटा कॉन्फिडेंस चेक होगा. पार्टनर इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन योर टेक्निकल्स. दे माइट आस्क सम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स व्हिच इज देयर, but 90% of the cases they'll check your confidence. They'll check whether you are a long term sustainable resource and are you ready to learn. I don't know how many of you are attending our pre-placement talks for previous companies. And also we had a pre-placement talk with Motilal Oswal sir. I don't know how many of you have joined in. That time he also said one thing. He'll check the attitude. बंदे का attitude क्या है? काम 19 आता है चलेगा भाई, attitude सही होना चाहिए. He should be ready to learn. ठीक है, तो that is something which every person is going to be checking. सर तो ये कैसे चेक करेंगे? कोई थर्मामीटर लगाएंगे क्या? दिल पुट थर्मामीटर ऑन अस एंड आस्क? नहीं बेटा. They'll just ask the such type of question which will help us to understand. Are you a visionary guy, or are you someone who is ready to lead a team? Or do you have some leadership qualities? How good you are in terms of taking the new tasks and stuff? Intentionally, there are a lot of cases where in some of the interviews before your partner round goes, you will be also given a case study round. जैसे कि say for example, you're going for a FDD. What is FDD? Financial due diligence. When you go for FDD domain, इसको SAT के नाम से भी बोला जाता है, strategy and transaction. We'll come to it in a while. So when you go for FDD role, investment banking role, management consulting role, they'll give you a case study intentionally before the partner round is done. They many a times they do not expect a right answer, but what they expect is कि are you able to solve this case study? ठीक है, आपको एक फाइनेंशियल मॉडल दे देंगे और बोलेंगे डेवलप अ प्रोजेक्शन रिपोर्ट फॉर दिस, और दे माइट गिव यू सम टेक्निकल केस स्टडी ऑन एक्सेल, और दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर सम सॉल्यूशन फॉर, लेट्स टेक अ सिंपल केस, व्हाट कोका कोला शुड डू टू कम्पीट विद कैंपा. ऐसा करके भी आप कोई केस स्टडी दे सकते हैं, एंड दे विल आस्क यू टू सबमिट अ डेक. So depending on the companies and domain you are going into, you'll get a case study also. Now, अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक जा रहे हो और एनी ऑफ द कंपनीज आर गोइंग इन, तो ये सब इतना चक्कर नहीं है. एक राउंड लेंगे, खत्म करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द केसेस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज सेज बी प्रिपेयर फॉर द टफ. टफ प्रिपेयर करो, आसान तो वैसे ही निकल जाता है. ठीक है, तो दैट इज दैट. एंड आफ्टर दिस इज डन, फाइनली यू विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, फाइनली यू विल बी सिलेक्टेड. आफ्टर द सिलेक्शन इज डन, your background check will happen. Background check में क्या होता है? They'll ask you to submit some of the documents like your Aadhaar card, PAN card, your 10th, 12th mark sheet, right? आपने कोई खून वून तो नहीं किया, वो चेक करा जाएगा. नहीं किया ना? हाँ. तो that all things are gonna be tested around. मजाक कर रहा हूँ, हाँ. And plus they'll also check your BCom mark sheet and all the stuff. Basic stuff is gonna be checked. ठीक है? तो this all process goes. ठीक है? तो in this journey, क्या क्या आपको करना है? भी नंबर वन, यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स. यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल एट ऑल दिस प्लेसेस. नाउ द प्रॉब्लम इज मेनी अ टाइम्स व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग विद यू इन द फ्यूचर. मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे. नेहा जी, ठीक है, नेहा जी बड़ी बिजी हो गई फोन में. अरे कहीं नहीं जाएंगे भैया, अब तो सीए बन गई हो बेटा, तुम्हारे पास ही रहेंगे. ठीक है, हाँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मेनी अ टाइम्स व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम विद यू इज व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग इट टू कंपनीज, यू माइट नॉट गेट अ रिप्लाई. होगा आपके साथ, अभी नहीं हो रहा है, अभी तो नया नया ताजा ताजा है ना. अभी तो मस्त हनीमून पीरियड है आपका, 3-4 दिन, यू विल एंजॉय लॉट. बट आफ्टर 1 month यू विल फेस दिस प्रॉब्लम. आई एम टेलिंग यू दैट यू विल कीप ऑन अप्लाइंग इनटू द कंपनीज एंड देन यू से यार कॉल ही नहीं आता यार, कॉल ही नहीं करती मेरे को एचआर, है ना. तो यू कीप ऑन अप्लाइंग इनटू मल्टीपल कंपनीज एंड योर फ्रस्ट्रेशन लेवल विल डेवलप. द रीजन इज यू आर नॉट रीचिंग टू द राइट पर्सन. दैट इज अ प्रॉब्लम. एंड नंबर 2 इज यू आर नॉट हैविंग अ राइट रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इज देयर. नाउ वन hardcore truth which very less people tells you, which I am telling you very openly. बच्चा बोलता है सर कैंपस कैंपस में हम प्लेस हो जाएंगे. दिस इज अ कैंपस डेटा, राइट. अगर आप कैंपस का डेटा देखते हो, दिस इज अ डेटा फॉर मार्च 2024. ठीक है, देयर वर, if I'm not wrong, I don't recall the number of people, but if you could see around, there were around this is March 24 means November 23. ठीक है, तो नवंबर 23 में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हाउ मेनी सीएस गॉट क्लियर्ड, बट यू कैन जस्ट गूगल इट. अराउंड 10,000 के आसपास क्लियर हुए थे. उसमें से यू कैन सी 2200 पीपल गॉट प्लेस बाय कैंपस. तो 20-22% ही लोग कैंपस से प्लेस होते हैं गाइस. तो स्टैटिस्टिक्स है. बाकी लोग कहाँ प्लेस होते हैं? ऑफ कैंपस. ठीक है, तो व्हाट यू गाइस डू, यू कीप ऑन ड्रीमिंग अराउंड कि सर कैंपस है, कैंपस से जॉब लग जाएगा.
लगेगा, but you never know whether you'll get it or not. This is the data for previous campus, right? Previous campus में around 11,000 CAs got cleared, approximately 3,700 got placed. Number of offer accepted, the number is not given as joined वाला number नहीं दिया है, ठीक है? So that is what it is. So what I'm trying to tell you is, please understand, when you're a CA, life never becomes easy. Life become more complicated, and you have to be more focused. In short, I say that if you want a best package for this next 3 months, you have to give your 100%, the way you have given for your CA family. Because please understand, the world is competitive outside, and 14,000 is, trust me, is a big number. बहुत बड़ा नंबर है भाई, 14,000 CAs बनना बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, it's a big number which is there, which I could see it around. So to get into the best companies, you have to be the best, which I believe. Okay. So this is what you have to do. Number one, you have to get some good references. Number two, you have to apply into these portals. Number three, your resume should be very good enough. That is there. Number fourth, you should be able to speak. Please understand. देखो यार, CV अच्छा बनाया, but pre-screening में HR ने पूछा, शिवम, how many attempts you have taken to clear your CA final? You're not able to give a justified answer. और HR asked you, शिवम, why do you want to get into start audit? नहीं बोल पाए, वो फोन काट देगी यार, because they have other 14,000 options with them. फैक्ट है, बुरा लगे सच लगे, जो है भाई, because everybody wants a best resource. सीधी सी बात है ना, अगर आपको आपकी दुकान में, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव योर शॉप, आपकी खुद की दुकान है, ठीक है, यू हैव टू हायर वन गाय, ठीक है, तो आप भी तो चूजी बनोगे ना, यू विल आल्सो से दैट यार थोड़े अच्छे आदमी को लेते हैं, पैसा तो उतना ही देना है. तो सिमिलर वे, एवरीबडी इज गोना बी वेरी वेरी चूजी, बिकॉज इट्स अ इंटरनेट एरा. वैकेंसी छुप के थोड़ी रहेगी, एचआर दुबुक के रखेगी या मैं नहीं बताऊंगा. अब गोल्डमैन की वैकेंसी है, 1 सेकंड में लोग ढूंढ सकते हैं. आई तो गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So the vacancies finding out is simple, but getting out there, clearing an interview is always required and importance of a preparation. ठीक है, जैसे सीए फाइनल का प्रिपरेशन किया था, वैसे इसका भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा गाइस. ठीक है, तो ये माइंडसेट में मत रहना कि भाई अपुन ही भगवान है, राइट? दैट इज देयर. हो सकता है बगैर इंटरव्यू के भी क्लियर कर लो, बट लो वाई टू टेक अ रिस्क, दैट इज व्हाट आई से. ठीक है, आफ्टर दिस इज डन, यू विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन. नाउ एवरीथिंग विल बी बेटर व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस आउट. After this is done, you will have a technical round, CFO round, and selected. Sir, one more question, sir. Sir, ये सब तो ठीक है, but the question is where I should go and apply. मतलब for which domain I should apply. कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, तो in short, I'll just give a summary of what all domains majority of the hiring happens for a CA. ठीक है, I'll give a short summary. ठीक है, कि क्या होता है हर एक डोमेन में, so that you can just think on it. ठीक है, and if you have additional queries, definitely we'll be happy to cover it out. ठीक है, तो one by one I'll be just speaking on every domain. You can just think on it, which domain excites you the more. So the first very interesting domain is the statutory audit domain. ठीक है, statutory audit domain, one of the highest vacancy, you'll find it out in this domain. This domain I generally divide into two parts, where I say that you'll have a vacancy for Indian firms, right? Indian firms and global firms. I hope you're aware of global firms. Global firms are EY GDS, PwC SDC, Deloitte USI, KPMG Global Services, KGS. Then you have BDO Rise, GT Indus. These are global services, the global leg of entities which are there. What they do, mostly they'll have an entity outside India, they'll outsource the work in India. So that is how the global firm works. Indian firms are like the firm who is bringing a business in India and doing the audit in India. That is what Indian firms are. Okay, so there are two different types of firms, which is there. Now, when you get into a stat audit, what are areas you work on? See, you work on, number one, you work on Indies. Okay, you work on Schedule 3, CARO, Companies Act. Okay, Companies Act. Then you also get an exposure of doing tax audit. Okay, then you do some certifications. Plus you audit P&L, balance sheet, and cash flow. ये सब चीजें आप करते हो. One of the best things CA and Sumit ji is when you work in a stat audit, you get a highest amount of exit. सबसे ज्यादा exit stat audit में मिलता है. क्योंकि क्या है कि इसमें you get to work on multiple domains. Number two, you're not working specifically with one specific company, right? You're working in a multiple industries or domain which is there. Now this stat audit is again further divided into 3 parts, which very few of you will tell you. ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है सेशन आपके लिए, बट प्लीज ध्यान से सुनेंगे. So this stat audit is further divided into 3 parts.
What three parts you are talking about, sir? So three parts are generally says TMT, ISC and FS. फिर ये क्या है TMT, ISC, FS? बेटा this is a subdivision of a sectors which is there. जैसे कि FS से for example you got placed into KPMG FS. तो मतलब क्या यू आर गोना बी वर्किंग इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज ओनली, तो उसी प्रकार की कंपनीज का आप स्टार्ट ऑडिट करोगे. बट व्हेन यू आर गेटिंग इनटू टीएमटी इट्स टेलीकम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, यू आर मोस्टली गोना बी वर्किंग इनटू दोस एरियाज. आईएससी इज मोर टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर रिलेटेड स्टफ. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर यू आर गोना बी प्लॉटिंग इनटू यू विल बी एबल टू join the stuff. Now, also one more important thing, the package might vary depending on the sectors which is there. Last time KPMG India have differentiated the package between, this is called as non-FS, है ना? तो KPMG has differentiated the package between FS and non-FS. तो पिछली बार क्या हुआ था? FS has a higher package as compared to the non-FS. ऐसा भी हो सकता है. तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखना, ऐसा आंख बंद करके मत चले जाना कि भैया क्या है, पहले पूछ लेना. Before you are going to be joining any of the places, understand whether you're getting FS, non-FS, and what part of our entity you're going to be working with. ठीक है, तो स्टार्ट ऑडिट एवरीबडी नो व्हाट यू डू, हाउ डू यू डू, राइट, विच इज देयर. वैसे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस डोमेन इन डिटेल, आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट लेक्चर्स ऑन एवरी डोमेन ऑन माय यूट्यूब चैनल. You can just check it around. You'll get a better clarity on what start audit is. But this is one of the domain. Many of you worked into this. ठीक है, so that is there. Number two, very interesting domain and the growing domain these days is internal audit and forensics. Internal audit and forensics. Now, what you do in internal audit, I always say three things you do in internal audit. तीन मेजर काम करते हो आप इंटरनल ऑडिट में. If someone asks you this question also in interview, you can answer the same. You can talk about this. You talk about what is process. Then you talk about what are the risks involved in the process. And number three is what are the controls addressing those risks. तीन चीजें आप करते हैं when you work in internal audit. You see the process, you understand the process, you see the risks which are there in the process, and then you map the controls. When you mostly going to be working in internal audits, you are going to be working into RCMs. मुझे नहीं पता कितने लोगों ने RCMs बनाए, risk control matrix, right? And you also prepare an internal audit report. याद आ रहे तीन कलर? जिसको नहीं याद आ रहे मैं दिखा देता हूँ कैसे तीन कलर दिखते हैं. ठीक है, to prepare a detailed internal audit report which is there, and based on that you try to identify the risk, what was the risk in every respective processes, and then you give a report on the same. तो कुछ इस प्रकार की एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनती है इफ यू हैव वर्कड ऑन इंटरनल ऑडिट. ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू. याद आ रहा है कुछ जिन्होंने इंटरनल ऑडिट में काम किया उनको याद आ रहा होगा. ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गुस्से से मत देखो मेरे को. ठीक है, ऐसे आप रिस्क रिपोर्ट बनाते हो, यू मैप द रिस्क रेटिंग एंड एवरी रिस्क को यू प्लॉट इट अराउंड कि व्हाट वर्क यू हैव डन एंड व्हाट वाज द रिस्क रेटिंग. ठीक है, यू ऑडिट द प्रोसेस, यू सी द प्रोसेस, यू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स की कंपनी के कंट्रोल्स क्या है, एंड देन यू गिव योर opinion ki what was the issue. Similarly, you try to give some recommendation also. The internal audit is a bit different from stat audit because stat is something where you do an IFC also. Stat में हम process check testing भी करते हैं. Internal audit is 100% process testing. Process देखो, risk देखो, controls क्या लगे वो देखो, और end में recommendation दो कि this is what the management can improve. So this is the internal audit. But what is the forensics? Forensics is much more advanced than internal audit. Means when it comes to an identification of a fraud, a forensic auditor comes. जैसे कि वेरी सिंपल एंड फेवरेट एग्जांपल, भारत पे हैड अ फ्रॉड. पता है भारत पे में फ्रॉड हुआ था? अरे सुना है ना, किसने फ्रॉड किया था भारत पे में? एनीवन? 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 किसी को याद है? हाँ, ये याद है, अश्लील है ना, आया था. When fraud happened in Bharat Pay, a forensic auditor was appointed. One favorite dialogue I give in every session, and that is, क्या हर कंपनी चोर है? Do you think every company is a thief? The answer is no. But can every company become a thief if a control is weak? Yes, no? क्या हर कंपनी चोरी कर सकती है अगर कंट्रोल वीक हो? हाँ.
कैन कंपनी डू अ थीफ? क्या कंपनी चोरी कर सकती है? क्या एम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं इवन इफ द कंट्रोल इज स्ट्रांग? हाँ, कंट्रोल स्ट्रांग होने के बाद भी लोग चोरी कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर द फॉरेंसिक ऑडिटर कम्स। So whenever there is a fraud, who is responsible to identify you? Who are you? You are a forensic auditor. आप समझ पा रहे हो? तो when you are very much interested and inclined in finding out a fraud ढूंढने में बड़ा मजा आता है, तो forensic auditor बन सकते हो आप। ठीक है, तो that is one of the very interesting and growing domain. राइट, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेटेड मल्टीपल सेशंस ऑन माय यूट्यूब। आप जाके कभी देखोगे तो आपको काफी सारे हर एक डोमेन पे छोटे छोटे वीडियोस और सेशंस आपको दिखेंगे व्हिच यू हैव ऑलरेडी टेकन। आई एम जस्ट समराइजिंग दिस सो दैट यू नो कि व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, डन। नाउ सिंस मेनी ऑफ यू आर हियर, एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का मन हो रहा है मेरा। सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्या है सर? ठीक है, द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट इज वेरी सिंपल। आई विल गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आपको एक स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट। केबीसी टाइप, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, फोन ऑफ फ्रेंड नहीं है बस यहाँ पे। ठीक है, तो ये इट्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, बट यू हैव टू गिव द आंसर इन द यूट्यूब लाइव चैट। अब जूम पे भी है कुछ लोग, यूट्यूब पे भी कुछ लोग है ना, तो गलत हो जाएगा। तो सबको यूट्यूब चैनल पे जाना है मेरे। राइट, आई जस्ट शेयर यू द लिंक। ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर दिस इन द चैट। ठीक है, द पर्सन हु आंसर्स इट द फर्स्ट एंड द करेक्ट मैनर इज गोना बी विनर। जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन इन द मैरिको। ये मैरिको के इंटरव्यू केस स्टडी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं कि क्या आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक है, तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन इन द स्क्रीन। राइट, you have to give the answer in the YouTube live chat. A person who gives the answers first on the YouTube live chat is gonna be winner. ठीक है, डन। मैंने लिंक शेयर किया है पे। अरे मीटिंग छोड़ के नहीं जाना रे बाबा, कुछ लोग मीटिंग छोड़ के यूट्यूब पे चले गए। ठीक है, डन। तो आई जस्ट शेयर द क्वेश्चंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बी रेडी, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देखते हैं कौन आंसर कर सकता है इसको। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर कर सकता है इसको। एक सेकंड दीजिए, आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन। यूट्यूब लाइव पे आंसर करना है। ठीक है, यूट्यूब की जनता जीत जाना, जूम की जनता जीत जाना। ठीक है, there's a question which is there. You have to tell, looking into this, which company you will buy, which company you will sell. कौन सी कंपनी आप बाय करोगे, कौन सी कंपनी आप सेल करोगे? देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चन है। Which company you will buy, which company you will sell. Answer you have to give it on a YouTube live chat. YouTube की जनता सही जवाब दे दो बेटा। Which company you will buy, which company you will sell. Answer on the YouTube live chat. A person who gives the right answer will get a giveaway of $500. हाँ, पैसा ही पैसा होगा। Will announce the winner at the end. जल्दी जल्दी आंसर करो, सीएस हो यार। जो जूम पे है, if you are not able to find out the link, I've shared the link in the chat. You can go and answer it on a YouTube live. जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी बोलो। निशिता कह रही है लाइफलाइन रहती तो मजा आ जाती। बेटा यहाँ लाइफलाइन नहीं मिलेगी। ग्रेट, come on guys, last few minutes, last few minutes, for a few seconds. अथर्व कह रहा है मैं यूट्यूब पे गया हूं तो अब लाइक भी कर ही देता हूँ। बहुत बढ़िया अथर्व, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा भाई। कम ऑन गाइस, आंसर्स प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड टू गिवन द सेम। अरे लाइक भी कर दो यार, वीडियो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। डन, आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू आंसर्ड द सेम। हाँ जी सर। सो द करेक्ट आंसर विल डिस्कस इट एट द एंड। याद दिला देना बस, एंड में विल डिस्कस द विनर एंड विल अनाउंस द विनर एंड आई डिस्कस द आंसर एट द एंड एज वेल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार के भी केस स्टडी बेस्ड डिस्कशंस आ सकते हैं, वेर यू विल बी मोटिवेटेड टू गिव द आंसर्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में से आपको सवाल पूछे जाएंगे एंड दे यू विल बी एक्सपेक्टिंग टू आंसर द सेम। ठीक है, तो दैट इज देयर। देन आफ्टर दिस इज डन, यू हैव सम अदर डोमेन्स, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। Then you have third very interesting domain, and that is FDD, Financial Due Diligence, right? SAT के नाम से भी आप इसको बोलते हो, Strategy and Transaction. What do you do in due diligence? Very simple. Before any of the deals happens, you will be doing a DD of a person कि whether the company is worth investing or not. In short, इसको मैं बोलूँ, you check the financial health of a company. बच्चा कहता है सर स्टार्ट ऑडिट तो किया ना, देन व्हाई डू वी नीड टू डू अ डीडी? बिकॉज इन ड्यू डिलिजेंस यू विल गेट टू नो इन एंड आउट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की पूरा इन एंड आउट देखने मिल जाता है। जैसे कि लेट मी टेक अ सिंपल केस, छोटा सा केस आपको बताता हूँ। सो दिस इज अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट व्हिच आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू ऑफ अ बायजू। एक बायजू की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है। बायजू ने सबने सुना होगा, ठीक है सर? देखो, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच इज देयर व्हिच इज नेवर इन द स्टार्ट ऑडिट। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि how much sales a one salesperson can make in a quarter. Do we publish this in a stat audit? The answer is no. ठीक है? Then we also showcase something like what was the conversion made, what was the conversion made from 9th standard to 10th standard and 10th standard to 11th standard of a students. कितने स्टूडेंट्स को मैं प्रोडक्ट बेच पाया? ये सब स्टार्ट ऑडिट में नहीं है भाई। Why did he showing this? Because this helps the decision or this makes the life of our investors easy before you are going to be investing in. So before you're going to be doing a due diligence, right, you're going to be investing or working on majorly three major things. That is, you showcase and talk about EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Then you show working capital. And then you third you show is net debt or cash. ठीक है, इसके साथ साथ आप कुछ KPIs भी दिखाते हो, which is key performance indicators. That is shown here. Number fourth, of course, your favorite tax domain, which is called as direct tax. राइट, काफी सारी आपको ओपनिंग्स और वैकेंसीज दिखेगी डायरेक्ट टैक्स डोमेन में, व्हिच इज देयर। व्हिच यू टॉक अबाउट नंबर वन, द सीआईटी। सीआईटी होता है कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स। देन यू विल फाइंड एमएनए टैक्स, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स। देन यू हैव ट्रांसफर प्राइसिंग। समटाइम्स ट्रांसफर प्राइसिंग इज मर्ज विद इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसके साथ भी मर्ज हो जाता है। एंड फोर्थ प्रोफाइल इज कॉल्ड एज जीएमएस। जीएमएस इज कॉल्ड एज ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज। इसका मतलब होता है all the clients which are based outside India, we are going to be auditing sitting in India. ठीक है, so that is going to be there. So that is what a mostly a GMS is all about. ठीक है, you will be working on expats. सुना होगा आपने expats? So that is mostly a role you will be working on. So taxation, guys, is majorly divided into three parts. First is advisory, second is litigation, and third is compliance. Before you join any of the company, try to get focus more on advisory and litigation instead of compliance. ठीक है, कोशिश करें एडवाइजरी और लिटिगेशन ज्यादा मिले कंप्लायंस के अलावा। ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज देयर। देन यू हैव नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन व्हिच इज नंबर फिफ्थ, इज कॉल्ड एज आईडीटी डोमेन। आईडीटी डोमेन further divided into two parts, which I called as pure GST, customs, FTP, जो आपने पढ़े। कस्टम्स और FTP का प्रैक्टिस इज वेरी लेस विद फॉर्म्स, वेरी रेयरली विल फाइंड इट आउट, इट्स वेरी लोकेशन सेंटर। सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन इज सब्सिडी साइड। ये बहुत ग्रोइंग प्रैक्टिस है which is there. So what is the subsidy side domain, guys? So say for example, a company like Hero MotoCorp or a company like Mercedes-Benz want to set up a plant in India. अरे सबसे पहला सवाल है कहाँ सेटअप करें? तो you guys will be helping those companies to decide where to set up. Like Tesla want to set up a plant in India, अक्षय जी, तो सवाल है कहाँ सेटअप करें? You guys will be helping them to decide where the companies can get a maximum subsidy out of it. So this is one of the domain where you can get into. ठीक है, then next domain
ये फिफ्थ। नंबर सिक्स्थ, कितने चाहिए प्लीज? देन यू हैव मैनेजमेंट कंसल्टिंग। Now, what is management consulting? Many of you know it. Management consulting do three important things. They solve the problem, but they solve the problem at a fast speed, but for the top management. ऐसी प्रॉब्लम जो टॉप मैनेजमेंट की और तेजी से सॉल्व करना है वो कंसल्टिंग में सॉल्व होगी। सर एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो लेट्स टेक अ सिंपल केस ऑफ कैंपा कोला। सर, कोको कोला वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइट फ्रॉम कैंपा कोला, व्हाट टू डू? और लेट्स टेक अ वेरी सिंपल केस, Vodafone Idea is facing an issue to survive in the market. What strategy they should follow? प्रॉब्लम है, हाँ है। तेजी से सॉल्व करना, हाँ है। कौन सॉल्व करेगा? टॉप वाले। ठीक है, तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग प्रॉब्लम। इट कैन बी पॉलिटिकल कंसल्टिंग आल्सो, राइट? इट कैन बी टेक कंसल्टिंग आल्सो। तो काफी सारी कंसल्टिंग प्रॉब्लम्स है विच यू कैन हेल्प ऑन। ठीक है, तो व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू आर स्पेशली इनटू अ कंसल्टिंग डोमेन। हर एक डोमेन पे आई हैव ट्राइड टू अपलोडेड सम सेशन ऑन यूट्यूब, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ठीक है, देन you have number seven. Your favorite is investment banking. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर देर आर मल्टीपल सब डोमेन्स, यू विल बी एबल टू गेट इट अराउंड। जैसे कि ना, दिस इज अ बैक ऑफिस रोल विच आई जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। जैसे कि यू कैन गेट प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल, देन यू हैव लीगल एंटिटी कंट्रोल, देन यू हैव फंड अकाउंटिंग। ये तीनों बैक ऑफिस रोल है, ठीक है? ऑल दिस आर बैक ऑफिस रोल। देन यू हैव इक्विटी रिसर्च। ठीक है, अब इक्विटी रिसर्च इट कैन बी फ्रॉम टू साइड, बाय साइड एंड सेल साइड, ये भी है। ठीक है, ये भी हो सकता है, दैट इज दैट। देन you will have someone working with VC, venture capital, that is there. इसके साथ साथ nowadays lot of people are also working with credit rating companies. Why I'm putting it in the IB bucket? Because mostly it's a funnel or a chain which you will be working into. So that is there. And some of you will be working into some of the other roles, different designations which might be offered. Okay, so this is the investment banking role. Then you have FP&A or business finance. नाम में ही समझ में आता है, फाइनेंशियली प्लानिंग एंड एनालिसिस। मतलब क्या? यू प्लान द नंबर्स एंड देन यू एनालाइज इट, हाउ डिड यू गो। जैसे कि आई प्लान टू मैन्युफैक्चर 10,000 फोन्स एंड सेल 10,000 फोन्स, ये प्लानिंग की। एक्चुअली आई वाज एबल टू सेल 8,000 फोन्स, व्हाट वेंट रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई डू एज अ एनालिसिस। सोचा था 10,000 बेचूंगा, बेचा 8,000 ही, तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट एफपीएनए इज ऑल अबाउट। ठीक है, so very interesting role. All the companies which are into an industry will hire you for this. Then you have a finance role. Finance role will be hired with the multiple designations and role. जैसे कि it can be a controllership. जैसे गोल्डमैन का जो भी वैकेंसी आया वो कंट्रोलरशिप रोल का आया, which is there, which is a pure finance role, which is there. Then you'll also find out an R2R role. R2R, mostly you'll find it out. Genpact is going to be hiring for this. R2R क्या होता है बेटा? Record to report. मतलब कि start from initiation of a transaction till reporting of a transaction you will be responsible. मतलब journal entry शुरू होने से लेकर ट्रायल बैलेंस बनने तक you will be responsible for the same. And number three is management trainee role, which is called as MTMT, right? Management trainee. What is the role of a management trainee? मतलब क्या होता है? Sir will hire you as a management trainee and we want to see you in our company till the time you become a CFO. ठीक है, तो that is the meaning of a management trainee. तो ये मेजरली आपको रोल्स दिखेंगे इन फाइनेंस। थ्री डिफरेंट डेजिग्नेशंस विल बी गिवन टू यू। मूविंग फॉरवर्ड, the next domain is banking. Right now, investment banking is different. This is a commercial banking. Commercial banking मतलब ये ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये वाले बैंक की बात कर रहा हूँ. You'll be getting some of the roles here, banking and NBFCs. और काफी सारी NBFCs भी आजकल आपको हायर कर रही है, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल हो गया,
फुलटन ग्रुप हो गए, ये सब एनबीएफसीज है। तो दिस ऑल एनबीएफसीज विल बी हायरिंग यू फॉर मल्टीपल रोल्स। जैसे कि दे विल बी हायरिंग यू फॉर क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम बोलते हैं इसे, आरएम रोल। ठीक है, देन यू हैव अ ट्रेजरी रोल, देन यू हैव अ इंटरनल ऑडिट, एंड देन यू हैव अ फाइनेंस। ठीक है, ये सब रोल के लिए ये आपको हायर करते हैं, राइट, व्हिच इज देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द सेशन इज, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सी। तो आपको पता पड़ रहा है कि भाई ये सब ऑप्शंस है मेरे पास, इसमें से आपको चूज करना है कि आपको क्या पसंद है। बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर योर सीरीज फॉर दैट डोमेन, प्रिपेयर एन एक्सपर्टीज फॉर दैट डोमेन, एंड देन अप्लाई। ठीक है, आप डिसाइड करोगे आपको क्या पसंद है, व्हिच इज देयर, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। इन शॉर्ट बोल देता हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है टू ब्रिंग बिजनेस। तो से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक, आपको एक क्लाइंट दे देंगे, बोलेंगे कि चलो सीएमओ इज योर क्लाइंट, सीएमओ के पास 1 करोड़ रुपए, तो आस्क देम टू मेक एफडी। अच्छा, सीएमओ को लोन चाहिए, गिव देम अ लोन। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर का काम है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्रेडिट मैनेजर? क्रेडिट मैनेजर का काम होता है टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस, वट एवर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पर्सन इज, दिल चेक अ क्रेडिट वर्दीनेस एंड अप्रूव द लोन बेस्ड ऑन व्हाट आरएम इज ब्रॉट। जैसे कि आरएम ने एक क्लाइंट आया सीएमओ, सीएमओ को चाहिए 100 करोड़ का लोन फॉर अ बिजनेस एक्सपेंशन। तो क्रेडिट मैनेजर इज चेकिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ सीएमओ एंड गिविंग अ पासिंग ऑन द लोन। ये होता है काम क्रेडिट मैनेजर का। ठीक है, तो टू डिफरेंट रोल्स विच आर देयर। ट्रेजरी ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इंटरनल ऑडिट यू आर अवेयर ऑफ, एंड फाइनेंस यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। इसके साथ साथ यू विल फाइंड आउट सम ग्रेट रोल्स विच इज कॉल्ड एज फास, सीएफओ एडवाइजरी, देन यू हैव सीमास। गाइस, ये सब का नॉलेज होना जरूरी क्यों है? बिकॉज अरे वैकेंसी है, पता तो होनी चाहिए किस डोमेन की है, क्या चल रहा है मार्केट में। ये तो बैठ के आप ढूंढते रहोगे, सोचते रहोगे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो दिस इज प्योरली एन इंडेस रोल where you will be responsible for Ind AS accounting, bookkeeping, or Ind AS consultation. जैसे कि every client is not that smart enough for preparation of financial statements based on Ind AS, right? So what they'll do, they'll outsource this work to the Big Four. They'll ask the clients or Big Fours or companies to prepare for this. So a lot of Big Fours have this department where they'll be hiring you for this role. Okay, so that is there. Then you have IT audit, which is mostly your software audit. इसको टीआरएस के नाम से भी कहा जाता है, विच इज टेक्नोलॉजी रिस्क अश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, टीआरएस काफी सारे बिग फोर्स हायर करते हैं इसके लिए। व्हाट यू डू, एनी ऑफ द प्रोसेस ड्रिवन, एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई चीज है, तो उसको आप ऑडिट करोगे, विच इज देयर। एंड देन यू हैव द लास्ट डोमेन विच आई कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर साइड डोमेन। तो सॉफ्टवेयर साइड में मेजरली यूल बी वर्किंग ऑन और यूल गेट एन ऑफर फ्रॉम, यहाँ पे आएगी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, एक्सेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनाई, राइट। तो दे विल हायर फॉर एसएपी रोल और ओरेकल रोल और माइक्रोसॉफ्ट 365 और वर्कडे। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ कि भाई देखो ये सब अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, आपको देखना है कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, यू हैव टू सी विच ऑल थिंग्स यू लाइक, विच ऑल डोमेन्स यू आर अवेयर ऑफ। ठीक है सर, एक बार समराइज करोगे तो मजा आ जाएगा। देखो भाई, मैंने क्या बताया सर, सीए तो बन गए, अब क्या करें? देखो, सीए बनने का क्या करना है, सबसे पहले टू स्टार्ट अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे सर? अलग अलग पोर्टल्स है सर। अप्लाई करेंगे बट कॉल नहीं आएंगे तो रेफरेंसेस ढूंढेंगे, विल फाइंड आउट अ रेफरेंस। सर इसके साथ साथ ध्यान से सुनेंगे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम समराइजिंग अ सेशन। सर व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग, यू नीड अ गुड ईमेल, गुड रिज्यूमे, गुड कवर लेटर। हाँ जी सर। इसके साथ साथ जैसे अप्लाई करूंगा, आई स्टार्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम कंपनीज। कंपनीज एचआर मुझे कॉल करेगी, दे आस्क मी सम बेसिक क्वेश्चंस व्हिच इज ऑन अ प्री स्क्रीनिंग। जैसे कि दे आस्क मी हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, दे आस्क मी व्हाई स्टार्ट ऑडिट, व्हाई दिस इंडस्ट्री, व्हाई दिस डोमेन, व्हाई दिस कंपनी, ऑल दिस बेसिक क्वेश्चंस दे आस्क मी। आफ्टर दिस सम कंपनीज माइट हैव अ टेस्ट, सम कंपनीज माइट नॉट हैव इट। जैसे कि कुछ कंपनी में जीडी रहेगा, कहीं पे एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, कहीं पे नहीं रहेगा। After this is done, their companies will also expect you to have a good technical preparation, right? Which they'll be grilling on. Some companies have 1 round, some companies have 2 rounds, some companies up to have a 6 round also. Then you also have a partner round and director round. But before partner round and director round, technical round में expect किया जाएगा कि you are going to be preparing your resumes great. They'll be asking you questions based on your resume and they'll be focusing more on technical. Partner round confidence round होता है, जहाँ पे they'll be checking whether you're long term sustainable resource and are you someone who's ready to learn. Once you're selected, your background check will happen. बट सर अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं बताया। स्टार्ट ऑडिट,
internal and forensics, FDD, DT, IDT subdivided into parts, DT subdivided into parts, consulting role, investment banking, multiple roles are there, FP&A, finance, multiple sub roles are there, banking, multiple sub roles, FAS, IT audit, software. So this all are the roles which are available. आई होप इतना सबको क्लियर है. हेलो हेलो. क्लियर गाइस? अरे देखो पता तो होना चाहिए भाई, सीए तो बन गया, कहाँ क्या ऑप्शन है, राइट? थोड़ा सा क्लैरिटी मिला गाइस? यस सर, यस सर. ठीक है जी. नाउ वंस दिस इज देयर, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच स्टार्ट्स फॉर यू, सर यू हैव टू प्रिपेयर. तो सीए तो बन गया, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. ये सब डोमेन का प्रिपरेशन कर लो, राइट? तो या वो ओन चॉइस, दो चॉइसेस है हमेशा लाइफ में, यही होता है. या तो खुद से प्रिपेयर कर लो और किसी का हेल्प ले लो. ठीक है. either you can prepare whatever I've taught you on your own or you can take a help. खुद से कर सकते हो तो बढ़िया है. नहीं कर सकते हो, if you need a help and if you are serious, then of course you can be a part of our batches. Right? तो हम लोग यही काम करते हैं. We help the people out to get placed into the companies you dream of. We help the people to train them. ठीक है. तो that is what our job is. That is what our work is. ठीक है. तो वही हम लोग कर रहे हैं. For the last 5.5 years, we have placed more than 15,500 chartered accountants in the company you can think of. Right, for last 3 consecutive attempts, we are ensuring that our students are getting the highest package in the campus as well as off campus. So there. Right now, one important thing, just wanted to tell you out, sir, our interview batches for this is starting from 10th of July. The problem this time is result is bumper result. We have to restrict and close our batch as soon as possible. ठीक है, तो 10 जुलाई की बैच भर जाएगी मेरे को लग रहा है. राइट, ऑलमोस्ट लॉट ऑफ पीपल हैव रजिस्टर्ड. इफ यू आर सीरियस and if you can devote your time, please join this batch. But the question and the requirement is if you are serious. What is covered here? In short, everything needed to get into the best companies of our world is covered here. In short, जब तक कि प्लेसमेंट नहीं होता है आपका, till the time will support you. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटीड प्लेसमेंट लग जाएगा भाई. मेहनत आपको करना है, सीवी आपको बनाना है. I'll support you till the time you get placed. So everything needed to get into the companies will be covered here. We have completed 77 batches. 77 batches हो चुकी है हमारी. अभी 78th बैच चालू हो रही है 10 जुलाई से. 79th बैच है 15 जुलाई से. हो सकता है काफी सारे बच्चे जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 77th 78th बैच ज्वाइन कर लेंगे. ये बैच हो जाएगी फुल. फिर आपको बचेगी मॉर्निंग बैच ही, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th, 5 दिन बाद. ठीक है. तो दैट इज देयर. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज द टाइम. सर क्या क्या कवर होगा इसमें? भाई हर एक चीज क्लियर होगी यहाँ पे. जैसे कि आपको वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू मिलेगा. योर रेज्यूमेस विल बी रिव्यूड. You'll be guided for ICA campus. We'll have a dedicated session for ICA campus for 4 hours. ठीक है. इनफैक्ट आज जो JR के पुराने बच्चे हैं उनके लिए आज शाम को भी सेशन है, इसके बाद 10 बजे के बाद. राइट, वी हैव अ सेशन फॉर देम, एक्स्ट्रा सेशन व्हिच इज देयर. कैंपस में जो कंपनीज आएगी उसके मेंटर्स आपको अलग से मिलेंगे. विल गेट वन फ्री मास्टर क्लास ऑफ योर चॉइस. वी हैव अ रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन. सर कितने दिन का बैच है भाई? 12 दिन का रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम है. और जो भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा हर वो चीज कवर की जाएगी. ठीक है, दैट इज देयर. सर तो क्या 12 दिन बाद खत्म हो जाएगा? नहीं. विल सपोर्ट यू टिल द टाइम यू गेट प्लेस. उसके बाद एवरी अल्टरनेट डेज आफ्टरनून में डाउट सॉल्विंग सेशन होता है. सर मान लो मेरा इंटरव्यू है कल केपीएमजी का, तो क्या आप किसी से कनेक्ट करवा सकते हो केपीएमजी में? हाँ, दैट इज एडवांटेज वी हैव. व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी हैव इज द कम्युनिटी. वी हैव अ वेरी स्ट्रांग कम्युनिटी बेस व्हिच इज देयर. Plus, you'll get to interact with a lot of industry leaders here if you're interested. And additionally, you'll get a AI coins when you're going to be a part of it. सर क्या बात कर रहे हो सर, कैसे AI coins होगा? एंड यू आल्सो टोल्ड अस दैट कि वी कैन प्रिपेयर आवर रिज्यूमेस. कहाँ से बना सकते हैं वो भी बता देता हूँ, एंड हाउ टू रजिस्टर ये भी बता देता हूँ. ठीक है. तो जो जो बच्चा सीरियस है और जो इंटरव्यू प्रिपरेशंस करना चाहता है, जो अभी चीजें मैंने बताई कि सर नौकरी पे प्रोफाइल कैसे बनाना, लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाना, यू विल बी शॉक टू हियर दिस. लिंक्डइन सेशन में 8 घंटे सिखाता हूँ. 8 घंटे. सर ऐसा क्या है लिंक्डइन में? जब करोगे तब खुद ही समझ में आ जाएगा कि लिंक्डइन पे भगवान दिखते हैं. ठीक है. तो आई शो इट टू यू कि हाउ टू फाइंड आउट अ रेफरेंस इवन इफ यू डोंट हैव इट. सर माय आर्टिकलशिप इज डमी फिर भी हो जाएगा. हाँ, क्योंकि आपको एक फ्री मास्टर क्लास मिल रही है. सर कहाँ से रजिस्टर करना है? गो टू cmonk.com. On the top of a website, you'll get the details and the link which is there. ठीक है. You can choose a batch of your choice. First is the evening batch, second is a morning batch. आप चूज कर लो जो भी आपको बैच चाहिए which is there. ठीक है. इसके साथ साथ आपको एक फ्री मास्टर क्लास मिलेगी. So even if your articleship is not that great, you can just watch one of the master class free of cost. Additional master class you get a 50% off. That is covered here. हर एक चीज टेक्निकली आपको सिखाई जाएगी. That is there. प्लस इसके साथ साथ आपको एक वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन मिलेंगे. जो भी मेंटर आपको पसंद है उनका
राइट, देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स ऑन आवर पोर्टल, वी आर वर्किंग विद 500 डिफरेंट मेंटर्स। तो आपको लगता है कि भाई केपीएमजी के डायरेक्टर से बात करना है, कुछ नहीं भाई, काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, आपको ऑलरेडी कूपन कोड मिला रहेगा, which is there if you can book any of the mentor of your choice। सर मुझे लगता है मेरे को जो बेन के मेंटर से बात करना है, तो भाई कर ले, क्या दिक्कत है, ऑलरेडी इट्स गोना बी देयर। Number three, right? We are the one who have prepared the first AI-driven website for all the chartered accountants, and that is where you can prepare your resumes also, right? तो यहाँ पे जाके आप अपना resume भी बना सकते हो, right? आपको जो भी नाम लेना है, say for example resume, आप जाइए अपना resume बनाइए। The only thing is that you need a coins, right? तो आप जीआर में आते हैं तो आपको 300 कॉइन और मिल जाएंगे, तो जहाँ पे आप अपने काफी सारे resumes बना सकते हो, राइट, अपडेट कर सकते हो। बहुत ही शानदार टेम्पलेट्स है यहाँ पे, राइट, एंड यू कैन अपडेट इट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ऑल्सो। दैट इज व्हाट यू कैन यूज इट अराउंड। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारे एआई बेस्ड टूल्स है, यू कैन जस्ट चेक योर रेज्यूमे स्कोर, यू कैन जस्ट चेक योर टाइपिंग स्पीड, यू कैन जस्ट चेक योर प्रैक्टिस विद द बॉट, राइट, यू कैन चेक योर इंग्लिश कम्युनिकेशंस। तो हर वो चीज वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आल्सो यू विल गेट इट। प्लस इसके साथ साथ काफी सारे वैकेंसीज which are there in the market, which we share it for our GI students, which is exclusive vacancies. Plus, we'll also try to support you till the time you get placed. ठीक है, तो वो भी चीज हम आपके लिए करेंगे when you are in the GR batch, which is there. ठीक है, तो नाउ इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू, नंबर वन, सर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको अच्छी कंपनीज में जाना है, यू रियली हैव टू प्रिपेयर योर गुड सीवी एंड एंश्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर इंटरव्यू। बिकॉज देखो, देयर इज नो टाइम एंड स्कोप फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक्स, मिस्टेक करने का आपको स्कोप नहीं है भाई। ठीक है, अमनदीप, एक ही चीज आपके पास कमी और वो है समय की, क्योंकि केपीएमजी में अगर 10 वैकेंसी है तो वो तो भर के खत्म करेगी भाई, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु स्मार्ट इनफ एंड हु कैन क्लियर देयर इंटरव्यूज वेल, हु इज अप टू द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू रजिस्टर फॉर इट, राइट, बिकॉज द सीट्स आर लिमिटेड, बिकॉज इस बार रिजल्ट काफी ज्यादा लगा है, तो सीट्स जल्दी बढ़ जाएगी इस बैच की, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, डन। नाउ विल डिस्कस द आंसर फॉर दिस केस स्टडी व्हिच वी हैव शोन टू यू, राइट। इसके बाद कोई डाउट्स रहेंगे तो विल टेक सम डाउट्स फॉर 5 मोर मिनट्स एंड देन विल वाइंड अप फॉर अ सेशन। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट ऑन आईसीए कैंपस प्लेसमेंट्स, ये कैंपस के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है और क्या करना है, विच इज देयर। तो कल का सेशन प्लीज मिस ना करो। और इसके अलावा अगर किसी को और भी डाउट्स रहेंगे कि सर इंटरव्यू बैच में क्या होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, एक अलग से सेशन ही उसके लिए रखा है। ठीक है, GR78 का प्री किक ऑफ सेशन विच इज ऑन 9th ऑफ जुलाई। तो क्या होगा इस बैच में, क्या होगा सर, कैसे होगा, सब कुछ कवर होगा नहीं होगा, राइट, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, राइट। तो आप इस सेशन में आ जाना, आपके सब डाउट्स क्लियर कर देंगे। अलग से एक सेशन रखिए ताकि किसी को कोई दिक्कत हो ना पूछ ले वहां पे। और आईसीए कैंपस का कल सेशन है, जो आप आ जाइएगा इवनिंग में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैंपस कैसे वर्क करता है, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू सो दैट यू कैन गेट इनटू गुड कंपनी। ठीक है जी। सर ये केस स्टडी का आंसर क्या है, राइट, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव गिवन आंसर्स एंड ट्राई टू गिव द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर द केस स्टडी इज बाय कंपनी सी एंड सेल कंपनी ई, राइट। इस केस स्टडी का सही आंसर है बाय कंपनी सी, सेल कंपनी ई। सर समझा दोगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं समझा भी देता हूँ। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन मेरिको। ठीक है सर, बाय कंपनी, सॉरी, सर बाय कंपनी सी क्यों और सेल कंपनी ई क्यों, ये जरा बताइए सर हमें, मुझे नहीं समझ में आया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेनेवर यू आर गिविंग एन आंसर, सबसे पहले आपको देखना होता है कि सर यहाँ पे पी रेशियो क्या है। भाई देखो, बाकी सब कंपनीज का जो पी रेशियो है विच इज एज पर द इंडस्ट्री एवरेज, इसका पी रेशियो ऑलरेडी हाई वैल्यू पे चला गया है। तो सिंस इट इज ऑलरेडी हाई वैल्यू, इट्स टाइम टू गेट एग्जिटेड, निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर वैल्यू हो चुकी है कंपनी। ठीक है, दैट इज वन। अच्छा, कोई बोलेगा सर पी रेशियो इसलिए ज्यादा है क्योंकि पीपल आर बिल्डिंग अ ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज दैट, दे आर अज्यूमिंग दैट दिस कंपनी इज गोना बी गेटिंग अ गुड मनी, बट now it's time to get exited because now it's a overvalued thing. Okay, so that is one. Number two, right? If you could see it around, there are other factors also which you should see whenever you're going to be solving this case study. जैसे कि सर इसका return on capital employed is very less as compared to other companies. ROC is one of the important parameter. भाई ROC तो main है, ठीक है, that is there. Plus कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है, अब ग्रोथ वाली कंपनी में थोड़ी तुम इन्वेस्ट करोगे, तो दैट इज व्हाई विल एक्सिट। प्लस प्रमोटर ने बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, मतलब फाउंड प्रमोटर ड्रिवन कंपनी चल रहा है। व्हेन यू डाइल्यूट सम ऑफ द स्टेक ऑफ अ कंपनीज, यू फील दैट कि हाँ चलो इन्वेस्टर्स की भी सुनी जा रही है, तो दैट इज व्हाई दिस ऑल थिंग्स विल मोटिवेट मी टू सेल। एंड व्हाई बाय सी, बिकॉज व्हेन यू सी दिस आउट, आरओसी इज आल्सो गुड इनफ, दैट इज देयर, stock return is also good enough, then sales growth is also good enough,
एंड द डाइवर्जन इज गुड इनफ, एंड प्लस दे आर लॉन्चिंग लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट्स गोना बी मोटिवेटिंग यू टू बाय, सी एंड सेल. ठीक है. So that is what the answer which was given by a lot of people around in the chat box. मुझे नहीं पता how many of you have given the right answer, but let's see who has given the first right answer. एक सेकंड जाओ, मुझे chat load करने दो. Meanwhile, we'll also open the forum for doubts. जिसको भी कोई भी doubts है, you can keep on asking me. I'll be happy to answer all the queries whatever you have. I think पार्थ शाह मुझे दिख रहा है have given the correct answer. उसके ऊपर का chat मेरा load नहीं हो रहा है. I think पार्थ शाह has given the right answer. पार्थ शाह, yes. Okay, now whatever doubts you have, you can put it out in the chat, right? Parth Shah, apni email ID, if you can give me out, so that I can happy to help you out. Okay. Yes. What's the timing for tomorrow's session? But tomorrow's session is at 8:30, which is there. Which one, which is the most recommended one? नहीं समझा बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखो. हाँ, ESG is one of the role where hiring is going on, right? तो ESG में भी hirings हो गई है, स्टार्ट हो गई है, बट उतना ज्यादा वैकेंसीज नहीं दिखेगी डायरेक्टली आपको. You have to find out some references and people around who can help you in ESG. That is that. ठीक है. सर, एनी प्रोमो कोड फॉर GR? नो बेटा, कोई प्रोमो कोड नहीं है. इट इज देयर बिकॉज इट्स नॉट अ जर्नी फॉर 12 days. 12 days का रिगरस सेशन है, उसके बाद डेफिनेटली यू नीड अ सपोर्ट आफ्टर द बैच. तो मेन तो है सपोर्ट है यार बैच के बाद का. राइट, बैच तो आप कर लोगे, बट उसके बाद जो असली मदद लगेगी वही तो इंपॉर्टेंट है. सर, मैं सिलेक्ट हो गया सर, KPMG में ज्वाइन करूं कि नहीं? ये भी तो एक सवाल है ना. गलत कंपनी ज्वाइन कर लिया तो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. So you have to just see this around. Yes, we'll have a session on every thing, right, in a GR batch, don't worry. Will the batch be in English? Yes, the batch is 100% in English because you have to give an interview in English. So my articleship ends on 1st October. Will it affect the pre-screening? To some extent, yes. Some companies will be expecting you to join early. Okay. Will tomorrow's session be available on YouTube? The answer is yes. YouTube पे available रहेगा. Yes, we'll have a psychometric session in our batch, GR batch में tension मत लो. Yes, if your articleship is going on still, you can join. Sir, I don't have any experience in this in state of audit. Is it possible to go there? Yes, Shubham. एक golden rule याद रखो, things can be learned, रोने का नहीं. GR batches is at 100% English. Sir, I'm preparing for FRM level 1. Which domain could be more beneficial for me? You can try for banking or IB side, which is there. नौकरी प्रीमियम का डिस्काउंट कोड मिलेगा क्या? हाँ बेटा, नौकरी प्रीमियम थोड़ी मेरा प्रोडक्ट है बेटा, ये तो अलग मांगने लग गया. Yes, interviews are always in English, my friend, which is there. How to take advantage of the fact that I was an industrial trainee in one of the largest banks. तो बेटा राहुल, it's all about how you present in your resume. वो बोलता है ना, जैसा दिखता है तैसा दिखता है ना. तो वो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रेज्यूमे व्हिच इज देयर. ठीक है. यूट्यूब पे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पुट इट आउट इन द चैट व्हिच इज देयर, विल बी हैप्पी टू कवर इट. राइट, शिवान गुप्ता हैज लेफ्ट. ओके सर, आई, अरे सर, हाँ अंजलि बेटा, आपको डाउट है तो आपका कल डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, उसमें आप आ जाइए. आप पुराने स्टूडेंट हो, राइट. कल आफ्टरनून में डाउट सॉल्विंग है और इसके बाद GR वालों का सेशन है 10 बजे. ठीक है, तो 10 से 10:30 आपका सेशन है, उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन है. तो GR वाले उसमें भी आप डाउट पूछ लेना उसके बाद. ठीक है. आई हैव जॉइंड द बैच. आई हैव अ करियर गैप. आई जॉइंड द बैच. आई हैव अ करियर गैप बिकॉज ऑफ अ मैरिज क्लियर्ड 3 years ago. विल आई बी एबल टू गेट जॉब? बिल्कुल हाँ, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी. बट हाँ, अगले 12 दिन जब बैच में आओगे बेटा, बहुत मेहनत कराते हैं. आप किसी को भी पूछ लेना कि कैसी मेहनत कराते हैं. ठीक है. तो दैट इज गोना बी देयर, बट ट्रस्ट मी, यू विल लव इट आउट. नॉट इनफ गुड आर्टिकलशिप. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कैन बी लर्न, रोने का नहीं. हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज इंडिविजुअली हो गया? How to work on a communication skills? But I've just showed you on our website. We have created a Versant bot. उसके साथ you can practice English communication. It is going to be helping you. ठीक है. Not sure about which domain to choose. बेटा domain wise guidance के लिए we'll have a 4 day session in our batch. तो batch में हम लोग 4 दिन इसी पे discuss करेंगे and we'll have a technical session also on this. I've applied for TRAS pre-result. I may have an interview before that. What to do? हाँ, तो interview है तो अभी एक वीडियो मेरा डला हुआ है TRAS का.
दैट इज, यू कैन जस्ट वॉच इट अराउंड। ठीक है। कुसुम पूछ रही है, मार मार्केट प्लेस सिमुलेशन अवेलेबल द बैच? मार्केट प्लेस सिमुलेशन जीआर बैच में खिलाते हैं, बट ओनली प्री रिजल्ट बैचेस। पोस्ट रिजल्ट बैचेस में हम सिमुलेशन नहीं खिलाते हैं, रीजन ऑफ अ टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है सर, कैन आई अप्लाई फॉर अ मेंबरशिप? अरे बिल्कुल, वेट किस बात का कर रहे हो? ठीक है, कैन अप्लाई। सर विच डोमेन हैज हाईएस्ट पैकेज? मैं वही कह रहा हूँ बेटा, डोमेन के पीछे मत भागो, अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो। अगर ऐसे पूछोगे विच डोमेन हैज हाईएस्ट पैकेज, तो फिर तो मैं टीचिंग बोलूंगा। ठीक है, समझ गए? मेरे तरफ मत दो करे, है ना? हाँ, जीआर का कोई डिस्काउंट कोड है क्या? नहीं बेटा, कोई डिस्काउंट कोड नहीं है, सबके लिए सेम प्राइस। हाउ टू वर्क ऑन अ कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव आंसर्ड। प्लीज मेक 15th जुलाई बैच इन इवनिंग। वारे मेरे शेर, मैं एक ही इंसान दो जगह कैसे अवेलेबल हो सकता है? तो तुम फिर अभी वो इवनिंग वाला ज्वाइन कर लो, 10 से जो हो रहा है। ठीक है। यस, जीआर बैच विल हेल्प यू टू improve on your communication skills, that is gonna be there. Which domain should I select if I study later for regulatory exams like SEBI and RBI? So beta, you should focus more on finance, because you will be getting more easier roles there when you are trying to get into this roles. Okay. Expected salary, beta, expected salary will vary domain to domain, but mostly the range between 10 to 15 is average. You can get it. That is what I can say. इन प्री किक ऑफ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट इज गोना बी देयर इन द नेक्स्ट 12 डेज। प्री किक ऑफ में वही होगा, अगले 12 दिन में क्या होने वाला है वो चीज मैं बताऊंगा। अहमदाबाद और सूरत मीटअप भी करेंगे मेरे भाई। अभी तो मुंबई मीटअप किया था, मुंबई दिल्ली मीटअप किया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर, बट इट वाज अ ग्रेट मीटअप। अनएक्सपेक्टेडली क्लियर्ड सी इंटर एग्जामिनेशन। हाँ, इंटर वालों के लिए बेटा अलग से सेशन में वीडियो कल डाल दूंगा। यू जस्ट वॉच इट अराउंड, व्हिच इज देयर। कांग्रेचुलेशंस, व्हिच इज देयर। हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन ईच बैच? बेटा सीट का आप टेंशन मत लो, आपको अटेंशन दिया जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। You will be given on the focus and you'll get on a spotlight multiple times, तो उसका आप टेंशन ना लीजिए। I'm currently handling a area manager accounts and statutory. To which domain can I target on this basis? नहीं बेटा, आप डोमेन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम रोल्स और एरियाज व्हिच यू लाइक, देन यू गो फॉर इट। ठीक है, आप करेंटली इस रोल में हो इसलिए मुझे कौन सा डोमेन चार्ज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई मेरी आर्टिकलशिप स्टैट ऑडिट से, तो अब मैं क्या करूं? बेटा आप देखो ना, आपको इंटरेस्ट टाइम आ रहा है, अगर ऑडिट पसंद है तो ऑडिट कंटिन्यू करो, नहीं है तो आप स्विच करो। आप सोचो कि चलो आई कैन गो टू फाइनेंस, आई कैन गो टू एफडीडी, तो दैट इज हाउ यू डिसाइड। सो इफ आई जॉइन 15th जुलाई बैच, वुड इट बी लेट और ओके? अगर आपको लेट लग रहा है तो 10 से आ जाओ। ठीक है, दैट इज देयर। विल वी गेट अ रिकॉर्डिंग? द आंसर इज यस, यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग फॉर द एवरी सेशन व्हिच हैपेंस इन जीआर बैच। द ओनली प्रॉब्लम इज इंटरव्यू प्रिपरेशन कैन नॉट बी डन बाय वाचिंग रिकॉर्डिंग। अरे भाई, फीडबैक मिलेगा तभी तो इम्प्रूव करोगे। क्या पत्थर को देख के बोलोगे हाँ भाई बता मुझे फीडबैक दे? राइट। एवरी डे यूल बी स्पीकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैच, बक 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 करवाएंगे आपसे। ठीक है, यूल बी स्पीकिंग अ लॉट, यूल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द बैच। ठीक है, 10 अटेम्प्ट मैटर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? पहले दिन ही सच सुनना चाहते हो? द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफिस यू आर गोइंग। फ्रंट ऑफिस में तो बहुत टफ है जाना, टू बी ऑनेस्ट, बट मिल गया तो बढ़िया है। ठीक है, बट हाँ अटेम्प्ट थोड़े बहुत मैटर करते हैं, रेडी साहब। ठीक है सर, इफ आई फाइंड स्विचिंग टफ सिंस मेनी कंपनीज रिक्वायर प्री एक्सपीरियंस। सर बट इफ आई फाइंड स्विचिंग टफ सिंस मेनी कंपनीज, हाँ तो उसके लिए आपको बेटा सीवी वैसा मोल्ड करना पड़ेगा, टू प्रिपेयर योर सीवी इन सच अ वे। ठीक है, डन। ओके, पार्थ जी का मेरे को ईमेल आईडी मिल गया है। पार्थ जी थैंक यू। अरे यार, ठीक है। यस, एनी मोर डाउट्स? आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डाउट्स। अगर किसी का और कोई डाउट है तो डोंट वरी, अभी तो 2-3 दिन वी आर गोना बी मीटिंग एवरी डे, तो व्हाटएवर डाउट्स यू हैव, हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज व्हिच इज देयर। ठीक है, अनेबल टू अप्लाई फॉर अ मेंबरशिप, अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर, प्लीज रीसेंड ओटीपी अगेन। आहा, अरे नालायक, मैं इधर आईसीआई की ओटीपी का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा रे? हाँ? अलग एक्सपेक्टेशन है भाई को, मैं आईसीआई की ओटीपी ला के दूं? नहीं भाई, मैं नहीं ला सकता वो यार, उसके लिए हैव टू कनेक्ट विद आईसीआई। सर इज आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रिलेवेंट
if I wish to work in entire different domain, बेटा yes, articleship is the most important part, right, which is there. कोई ने एकदम सही लिखा है, सीवी में फेक लिख सकते क्या, फेक इट टिल द टाइम यू कैन मेक इट। बट इंटरव्यूअर, मैंने बताया ना, मैनेजर राउंड इज मोस्टली अबाउट योर इंटरव्यूज व्हिच इज देयर, तो सीवी पे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर, सर इज प्री सीए एक्सपीरियंस काउंटेड एज 3 इयर्स? नहीं, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जर्नी देखने के लिए रहेगा, बट यू विल बी हायर्ड एज अ फ्रेशर। हाँ, कोई फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो फिर यू कैन शो इट आउट, जैसे दुबई में यू कैन, आर्टिकलशिप इज मेनी टाइम्स कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, तो वो हो जाता है उधर। इफ यू टेक अ स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास देन वी इनकॉर्पोरेट इन अ सीवी, यस, आप उसको सीवी में भी डाल सकते हो अगर मास्टर क्लास ले रहे हो, या अगर जीआर ले रहे हो तो एनीवेज यू गेट अ 1 मास्टर क्लास फ्री, तो उसका आप टेंशन मत लो। या तो अगर अलग से दिखाना है तो अलग से दिखा सकते हो, मर्ज इट आउट एज वेल। बट ये राहुल क्या मजे ले रहा, बोलता हाउ टू ग्रो बियर्ड लाइक यू, आ हा हा, गिव सम टिप्स। नालायक, इंटरव्यू की तैयारी पे ध्यान दो राहुल। ठीक है, डन। ठीक है, कैंपस का कल डिस्कस करेंगे बेटा, राइट बुदित जी, विल डिस्कस अबाउट द कैंपस व्हिच इज देयर। ठीक है, ठीक है, डन। चलो ग्रेट, तो विल मीट टुमारो गाइस, टुमारो सेशन इज ऑन आईसीए कैंपस, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन इट, ट्रस्ट मी इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ डज द कैंपस वर्क्स। ठीक है जी, चलो, तो विश यू ऑल द बेस्ट टिल द टाइम, एंजॉय योर डे, एंजॉय सम स्वीट्स, मिठाई विठाई खा लो, राइट, और मिलते हैं अपन शाम को, मतलब कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जिसको कोई क्वेरी रहेगा बाद में कमेंट सेक्शन पे लिख देना यूट्यूब लाइव पे।